The Nagaland State AIDS Control Society, in collaboration with the Nagaland Olympic Association and the Nagaland Athletics Association, announced the National Red Run 3.0 schedule for October 30, 2025 at the Agri Expo 4th Mile Chimugirima. The event aims to raise awareness about HIV and STI while promoting active and healthy lifestyles. NIT Manipur and Government Middle School Futoromi jointly celebrated World Food Day 2025 under the theme Hand in Hand for Better Foods and a Better Future. The opposition India bloc on Thursday announced RJD leader and former Deputy CM Tejasvi Yadav as its chief ministerial candidate for the Bihar Assembly election. On October 23, the Central Bureau of Investigation submitted crucial evidence and witness statements to the District Court in Karur, Tamil Nadu as part of the ongoing investigation into this year's tragic stampede. Hello viewers, this is Ranjimi Himjo and you're watching Primetime English. Now the news in details. The Nagaland State AIDS Control Society, in collaboration with the Nagaland Olympic Association and the Nagaland Athletics Association, announced the National Red Run 3.0 scheduled for October 30 at the Agri Expo 4th Mile Chimugirima. Hosted by the Government of Nagaland with support from NACO under the Ministry of Health and Family Welfare, the event aims to raise awareness about HIV and STI while promoting active and healthy lifestyles. At a press conference held at the NOAC Office Complex, Kohima, organizers launched the official logo, QR code for registration in 2-kilometer urban category run and the official jersey. The 2-kilometer urban run expects around 700 participants, while the 10-kilometer national competitive run will feature athletes from 35 states and union territories. Online registration for the open category is limited to 200 participants on a first-come, first-served basis. A fire broke out early Thursday morning at Paibijan village, Land 1, damaging 8 houses. Firefighters from the Central Fire Station brought the blaze under control quickly. No casualties were reported and the cause is under investigation. इधे मान फायर विक्टिम खान लोग खोटे गुस्सा हो इधर जीव किन्हीं वाले चितान सामान खान बचावा पारना नहीं अच्छा सिस्टर इधर जीव लादु किन्हीं का उलाशी आवे किमान टाइम दिलो मुझे तो जाना नहीं 8:30 आसपारी इन्हीं उलाशी ना एक तभी सामान उलाना है ताला घोड़ पर स्टार्ट हुई शे नहीं खाना बनाई था किसी में एक तभी उलाना है सामान खाली एक तब बक्सा उलाशी और कोई भी उलाने अच्छा तो इधर असल जीव लादु कुंदु साइड उलाशी वो तो साइड पर उलाशी वो तो घोड़ मोला घोड़ ला पीछे पर अच्छा इधर मान साशी गुले इधर क्यों एक ता सामान खान स्टॉक कुना रखे हैं इधर इधर कैसे तो बिस्कुट चना मटर बादामी तो खान स्टॉक कुरी ना रखे हैं बिकावले करने सब जुलिशे माने अपनी खान तो पहला बार भी इनका स्टॉक कुना रखे हैं ना कि पहला पर भी पहला पर रखी तक इसे इतिया भी रखी शे 40 साल जिसना था गया से ये तो डिमापुर ते ताते पर मकान इन्हीं का सामान रखी था किसे तो 10 to 15 लाख ले स्टॉक कुरी ना रखी शे सामान तो ताते भाई इंगा कुना तो इधर इन्हीं जिली ना इधर वाला खोई की मंचना था गो 8 মই তো না বাচ্চা হানকে রেডি কৰি থাইছে স্কুল যাবলে ডাঙৰ ছোৰাগে স্কুল যাবলে ৰেডি কৰি থাকিছে তো এইটো টাইমতে মইলা ছোট বাচ্চা ফোন চা আছে একটা মাইকে এইটো রুমতে বারাতে বহে দে ও তো লাইনতে বহে তাই কে মই দোকান পাঠাইছে বিস্কুট খান আনিবি মই দেৰেও আছে তো আমি আনতে একেলগতে সদায় বেৰাহে না তো তাইকে কৈছে বইনি যাই না দুধ আনিবি আৰু বিস্কুট আনিবি তো তাই আচানক একদম পাগলি নিচিনা দোকান পৰা পলাই না দিদি জুই লাগিছে মই ঘৰ বা ওলাবি কৈছে তো মই বি পট ওলাই না ইয়াতে তক চাটো ইটো গৰতে ঘৰ একটা দুইটা রুম আছে তো ইটো দুইটা রুমতে একোতো নাই 20 রুমতে তো কাপড়া ডিজেল ডালি না मतलब इना काला धुआं ना एकदम हिट प्राइस है तो हिट प्रा वो तो साइड पे नहीं ना इतु बेरा साइड तो मैला बबना तो बिस्ना ऊपर प्राय जुई तो लाई से तहान तो इतिया तो दिवाली टाइम आसे तो तहान पूजा करी ना इतु दिया
itu rakha tel bi hale to kapra bi hale to itu to baisnas pra bisnate girish hola itu brai lagala ase de to itu hit ado tahan to auto driver ase diesel khan petrol khan bi rakhi thakibo bare itu bra hit ase na ekbar bra itu hatu tala bera tu jola tu tatala hit tu moila itu oil boring saise na tate laga tu moi tu dekha logot motor on koribole on korna pani maribole bhabna to moi labi eto oil ta laga tu short korise moi short khaise kha logolot moi boy khai na baccha duijon ke loina afale ulaise eko bi ulao para nai moi la mota bi hajira ola ase moi bi iman din ek hafta nisna hospital de admit boy na operation korina iman duk pra tahan do driver ase olop saman loina olop din boibo jai jabo eko problem nai mohan to bisi sal moi 19 years. On October 21, the Chief Minister Mobile Operation Theatre CM Mode Surgical Camp was inaugurated at Longland District Hospital, bringing specialized healthcare to the remote areas. The tour camp held on October 21 to 22 was chaired by Lily, Nursing Superintendent, with prayers led by Reverend Bio Pom. Dr. Lanuakam, Medical Superintendent, highlight CM Mode's role in reducing healthcare access barriers for rural Nagaland. Dr. Tilhotulo Rutso, MLA and team leader, emphasized the initiative's vision to deliver surgical care at patients' doorstep, overcoming financial and logistical challenges. C. Salim C. Sanctum, ESC Longland, appreciated the team's service, while YB Angam, President of Pom People's Council, thanked Chief Minister Dr. Nipirio and the medical team for their efforts. The CMO team performed 44 surgical and 86 dental procedures during the camp, reflecting the government's commitment to accessible and affordable health care across Nagaland. NIT Manipur and Government Middle School Futhuromi jointly celebrated World Food Day 2025 under the theme Hand in Hand for Better Foods and a Better Future. The event was part of NIT Manipur project on mainstreaming agrobiodiversity conservation for climate resilience and sustainable livelihoods, supported by the National Mission on Himalayan Studies and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The program highlighted sustainable food systems, local crop diversity and kitchen gardening as vital steps for food security and improving rural livelihoods. Organizers hope to inspire community actions promoting climate resilience and sustainable farming. From October 13 to 15, the District Welfare Office WOCA organized an assessment camp for senior citizens and persons with disabilities at multiple community halls. The camp aimed to identify beneficiaries under the Rashtriya Vayashri Yojana and ATIP schemes, both run by the Ministry of Social Justice and Empowerment. 76 individuals were registered for assistive devices to improve their quality of life and promote independence. RVY targets PPL senior citizens, while ATIB supports a person with 40% or more disability with aids for rehabilitation. On October 14, Zavami village, Bek Nagaland and Bautu Kumai clan of Dungjoy village, Senapati Manipur signed a historic boundary agreement ending a long-standing land dispute. The resolution followed years of dialogue facilitated by the Joint Goodwill Mission formed in August 2022 to promote peace between the communities. The agreed boundary starts from an RCC pillar above NH 102, stretches to a low hilltop marked by RCC pillars, move up to Tirulu Muzo, Joe Rock, and ends at a common boundary stone shared by the involved clans. The agreement was signed by village and clan leaders and is final and binding for future generations. JCI Timapur creators inaugurated the first ever JCI clock tower of Zone 25 at Supermarket near Hotel Saramati, Dimapur.
The event was graced by JCI India National President Ankur Junjunwala and Zone 25 President Gunjan Harlalka. The clock tower was dedicated to the people of Nagaland as a symbol of growth and unity. Junjunwala urged students to utilize JCI India's scholarship schemes. JCI Dimapur creators also plan to install a water filter at a site to provide safe drinking water. JCI is an international organization of young people between the ages of 18 to 40 years, who are engaged in doing positive work in the society, creating positive impact in the society, trying to develop the society in a manner such that it is useful in the localities where it is operating. And it is an organization which is creating leaders among young people who can, in the future lead our world into a better place. Now in Dimapur, JCI is active for the last 5 years, from 2021. And since then, it has done numerous projects among the people, numerous activities among the people. It has been able to bring people together and guide them or point them in the direction of leadership. To that extent, this current team of JCI Dimapur, led by JC Bikram, who is the local president this year, they have also performed fantastically well. And I am here today as the national president to inaugurate this clock tower, the JCI clock tower, which has been installed in Dimapur at a very central location. This clock tower is significant. Why? Because number one, it tells people about what this organization really is. The clock tower has a little bit of information about the organization. It kind of displays the mission and vision of this organization for everybody to see and for everybody to associate with. So this is the beautiful gesture that has been installed. It will tell the people that this is a beautiful organization that is working around the world in 130 countries, more than 3 lakh people, and creating positive impact in the society. It will probably give people a reason to associate with us, more closely and join us in creating this impact that we are doing. So to that extent, I congratulate the team of JCI Dimapur creators for taking up this beautiful initiative and for all the good work that they have done this year and all the years in the past. I congratulate the people of Dimapur, for supporting this organization at every junction and enabling them to create positive impact. After this program, we will also be going to the civil hospital of Dimapur, where this chapter has installed a water purifier, so we will be inaugurating that also. And similar. A recent survey in Upper Siang Simong Community Forest uncovered 6 butterfly species never before recorded in India, highlighting the eastern Himalayas as a biodiversity hotspot. Conducted by researchers from A3 Bangalore and the Lytton Community Conservation Society, the study extended the known range of species previously found only in Southeast Asia and Tibet. Over 7 days, the team documented 90 butterfly species, emphasizing the region's rich but underexplored Lepidoptera diversity. The findings underscore the vital role of local communities like the Lytton clan in conserving these unique ecosystems. Five players from Sikkim have been selected for the Northeast Zone squad in the upcoming BCCI Senior Women's Inter-Zonal T20 Trophy 2025-26 to be held in Dimapur, Nagaland from November 4 to 14. The selected players Nantika Kumari, Pranita Chetri, Primula Chetri, Priyanka Gurmi and Samaita Protan make up the largest representation from a single state in the 15-member squad, with Nantika and Priyanka earning their first zonal call-ups. Shiril Lepcha, Sikkim Cricket Association psychotherapist, has also been appointed as the physio for the Northeast Zone team for the first time. The tournament features top players from 6 zones and serves as a platform for national recognition. SICA President Tika Suba congratulated the players and wished them success. Two journalists, Manbendra Nath of
Time and Abuddin Rahman of TY365 were attacked by a group of drunken youths in Latabar late Tuesday night. Both suffered serious injuries and were shifted to Guwahati for treatment. Police arrested 3 accused, Manab Haldar, Rajdeep Bordoloi and Krishna Bora, while 5 others are absconding. The local journalists body condemned the attack and demanded strict action. গৰিহণাযোগ্য এটা ঘটনা ঘটি গৈছে। আজি দুদিন পূৰ্বে মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত আমাৰ মানৱেন্দ্ৰ দেৱনাথৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক মানৱেন্দ্ৰ দেৱনাথৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত লঠাবৰি সেই স্থানত এদল দুষ্কৃতিকাৰী যুৱক মদমত্ত যুৱক তেওঁলোকে অতি পাশৱিকভাৱে মানে বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ যাওঁতেই মানৱেন্দ্ৰ নাথক উপৰ্য পৰি আক্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁৰ লগত সহযোগী সতীৰ্থ হিচাপে থকা DY365ৰ কেমেৰা পাৰ্চন আবুদ্দিনকো একেৰাহে উপৰ্য পৰি 2জনকে আক্ৰমণ কৰে আৰু এই ঘটনাই গোটেই সমগ্ৰ মৰিগাঁৱত ইতিমধ্যে তীব্ৰ জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে। এটা চাঞ্চল্যধৰ্মী ঘটনা আৰু আমি মৰিগাঁও জিলা সাংবাদিক সন্থাই দোষীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ মৰিগাঁও আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু জিলা প্ৰশাসনক কঠোৰভাৱে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ইতিমধ্যে 3জনক কৰায়ত্ব কৰিছে, বাকী আৰু 4-5জন আছে। সেই 5জনকো আমি অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিবৰ বাবে আমি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। লগে লগে এটা বস্তু আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, যোৱা 21 তাৰিখে নিশা মৰিগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত 2জন সাংবাদিক মানৱেন্দ্ৰ দেৱনাথ আৰু আবুদ্দিন আহমেদক এদল উদণ্ড মদ্যপান কৰা যুৱকে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে আৰু এই আক্ৰমণটো আচলতে আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আৰু মৰিগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত এই আক্ৰমণেই যে প্ৰথম আক্ৰমণ এনেকুৱা নহয়, ধাৰাবাহিকভাৱে আমি দেখা পাইছোঁ মৰিগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ সাংবাদিকক আগতো প্ৰহাৰ কৰিছে, সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত আক্ৰমণ, যথেষ্ট হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ মৰিগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত দেখা পাইছোঁ। আচলতে মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এটা বৃহৎ বিফলতা বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আৰক্ষীৰ যিটো টহলদাৰী ব্যৱস্থা, নৈশ টহলদাৰী ব্যৱস্থা কিন্তু খুব কম হৈছে আৰু তাৰ সুযোগ লৈ মদ্যপান কৰা এদল উদণ্ড যুৱকে মৰিগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে। হয়, যোৱা পৰহি যিটো ঘটনা আচলতে সংঘটিত হ'ল, আমাৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ আচলতে নিৰ্ভীক সাংবাদিক মানৱেন্দ্ৰ দেৱনাথ আৰু DY365ৰ কেমেৰা পাৰ্চন আমাৰ আবুদ্দিন ৰহমানৰ আচলতে যিটো ঘটনা সংঘটিত অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু গৰিহণাৰ যোগ্য। সেইদিনাখন আচলতে বৰ্তমান সময়ত আমি চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ যে যুৱ সমাজ আচলতে শৃংখলাবদ্ধ যদি নোহোৱা হৈছে, যি অশৃংখলতা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক দিনাখনে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত সুৰাপান কৰি এচাম উদণ্ড যুৱকে সদায় আহি ইয়াত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা আচলতে সৃষ্টি কৰি আহিছে, যাক বাধা দিবলৈ গৈছিলে আমাৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক মানৱেন্দ্ৰ দেৱনাথ আৰু DY365ৰ কেমেৰা পাৰ্চন আবুদ্দিন ৰহমানে। A 24-hour ban called by Dipramata Party MLA Ranjit Debarma began at 6 a.m. Thursday in Agadala, causing disruption in the city. The protest was led by Tripura civil society workers at Agadala North Gate, who burned tires and raised slogans demanding Bangladeshi go back. Mohammad Shah Alam, chairman of the party's minority cell, accused Mohammad Yunus, chief advisor of Bangladesh interim government, of conspiring to bring illegal Bangladeshis into Tripura. He warned that if the central and state governments fail to act against the illegal immigrants, the Tripura civil society movement will continue. রঞ্জিত স্যার আছে, সামনে কিছু ঘোষণা করবে, আমরা ভয়াবহ আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেক দিন ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস আপনার কোথাও কোথাও দিয়ে আপনার ঢুকছে। এটা বাংলাদেশের আমরা মনে করি একটা ষড়যন্ত্র, বাংলাদেশ সরকারের ডক্টর ইউনূস সরকারের একটা ষড়যন্ত্র, যে বাংলাদেশিদের আমাদের এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া। এটা আমরা ত্রিপুরাবাসীরা অনুভব করতে পেরেছি যে আমরা প্রত্যেক দিন সোশ্যাল মিডিয়াতে পত্র পত্রিকায় যেভাবে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশিরা ঢুকছে। যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে আমাদের রাজ্য শুধু বিপদ না, বিপদ সীমার উপর দিয়ে চলে যাবে। আমাদের নেক্সট জেনারেশন যারা আমরা রাজ্যবাসীরা আছি ওরাও বিপদে পড়বে, যার জন্য আমরা এই বন্ধকে। We'll be right back after a short break. Keep watching Nltv.
Welcome back, viewers. Now the next news. Pravesh Agarwal, a senior Congress leader and a car showroom owner, died from smoke suffocation after a fire broke out in his apartment in Lasutia. His wife Rekha is in critical condition on a ventilator, while the two children remain stable in hospital. The fire reportedly started from an eternal flame inside the home, police said. शोरूम के ओनर प्रवेश अग्रवाल जी जो वहीं उसके ऊपर 3rd फ्लोर पे रहते थे, तो उनके मंदिर में अखंड ज्योत से आग लगी है और धीरे धीरे वो पूरा धुआं पूरा घर में सफोकेशन हो गया है। उसके कारण सुबह करीब 5-1 बजे की घटना है। तो घटना के समय कौन कौन घर के अंदर था, क्या किसने किसको सूचना दी? घटना के समय पति पत्नी और 2 बच्ची उनकी, दोनों बच्चियाँ। प्रवेश जी क्या करते थे? ओनर है वो महिंद्रा शोरूम। कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या इसमें अभी फिलहाल? प्रवेश जी की डेथ हो गई है इसमें। बाकी RJD leader Tejasvi Yadav accused the BJP of using Bihar Chief Minister Nitish Kumar for electoral gains and vote. The party will finish JTU after elections. Sparking at a public event, Yadav said the alliance is based on political convenience, not ideology, and said Bihar voters are aware of BJP's tactics and will respond decisively in the polls. ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया, आखिर क्या कारण है? President Draupadi Murmu unveiled the bust of a former president, K.R. Narayan, at Kerala Raj Bhavan, honoring the first Dalit president of India. The ceremony was attended by former President Ram Nath Kovind, Bihar Governor Arif Muhammad Khan, and Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar. President Murmu praised Narayan's lifelong emphasis on education for human and national development. Narayan served as India's 10th president from 1997 to 2002 and passed away in 2005 at the age of 85. Before entering politics, Sri K.R. Narayan built a distinguished career in the Indian Foreign Service. Sri Narayan offered India's values of peace, justice, and cooperation with utmost sincerity. After his diplomatic career, he was elected to Parliament and went on to service as Union Minister. He was always steadfast to the principles of fairness and inclusion. Sri Narayan was also the Vice President of India. His journey reached its peak when he became the President of India. He carried into the Rashtrapati Bhavan not only his experience as a statesman, but also wisdom and humility of his personality. Ladies and gentlemen, Sri Narayan was deeply rooted in his connection to Kerala, his home state. He drew The Kedarnath Shrine in Garhwal, Himalayas closed its door for a winter season on Thursday after a special puja. Lord Kedarnath's palanquin was ceremonially moved to his winter seat at Omkareshwar temple in
Ukhimat, Uttarakhand. Chief Minister Pushkar Singh Dhami, along with hundreds of devotees and officials, attended the ceremony. Dhami highlighted the region's 17.57 lakh devotees who visited Kedarnath this year and praised the smooth conduct of the Char Dham Yatra. The temple will reopen in May 2026 with the exact date set during Mahashrivrati. Dhami also assured ongoing development work in Kedarnath and other pilgrimage sites to boost Uttarakhand as the spiritual capital of Santanan Dharma. बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि आज पूरे विधि विधान के साथ पूरी पूजा अर्चना के बाद में यहाँ से जो है कि मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और यहाँ से जो हमारी शीतकालीन जो गद्दी है, जो नीचे ऊखी मठ में भगवान बाबा केदार जो है कि वहाँ पर विराजमान रहते हैं, मैं आप सबके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से जो है कि 175 दिन की ये यात्रा। The special investigation team investigating the death of Muhammad Mustafa's sons, Akhil Akhtar, said the exact cause of the death remains unclear. Akhtar, 35, was found dead at his Panchkula home on October 16. His viscera will be sent for chemical examination to help determine the cause. Mustafa, former Punjab DGP, and his wife Razia Sultana, ex-Punjab minister, along with Akhtar's wives and sister, have been booked in connection with the case. The FIR was filed after a complaint alleging suspicious circumstances and foul play. The family claims Akhtar suffered from psychotic disorder and substance abuse for 18 years. Police continue to examine a video recorded by Akhtar's accusing family members as well as devices and documents related to the case. Mustafa denies all allegations and says he will come to the investigation to reveal the truth. इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज प्राप्त हुई है और साथ ही जो विसरा जो डॉक्टर्स द्वारा जो लिया गया बॉडी का वो भी प्राप्त हुआ है। अभी डॉक्टर्स ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है कॉज ऑफ डेथ के बारे में और हम जो विसरा को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद डॉक्टर से उसका कॉज ऑफ डेथ लिया जाएगा, कंक्लूजन जो होगा उसके बाद ही। अभी एग्जामिन कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी और जो मौका के हालात हैं उससे उसको मिलान करके केमिकल एग्जामिनेशन की को सबको मिलान करके उसके बाद ही जो है ना फाइनल वर्डिक्ट कुछ कह सकते हैं कि इसमें रीज़न क्या रहा है डेथ का। इसके बारे में ये जांच का विषय है और मानसिक रोगी था या नहीं था ये चीज़ें उसकी मेडिकल हिस्ट्री ही बता पाएगी कि वो रोगी था या नहीं था और अगर था तो किस तरह का ट्रीटमेंट उसको दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था, ये भी हमारी जांच का विषय है। हमने A fire erupted Wednesday night around 8:30 p.m. at Divya Apartments in Intrapuram, Ghaziabad. Nearly 1,000 fire tenders controlled the blaze within an hour. All residents were safely evacuated and no casualties were reported. Preliminary reports suggested that fire started from fiber sheets on a balcony. A detailed investigation is ongoing. आज समय रात्रि लगभग 8:30 बजे फायर स्टेशन वैशाली पर सूचना प्राप्त हुई थी। दिव्या अपार्टमेंट जो कि शक्तिखंड 2 इंदिरापुरम में पड़ता है उसमें आग लगी हुई है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। तत्काल हमारी ड्यूटी पे खड़ी हुई काला पत्थर और अटल चौक से गाड़ियां घटनास्थल के रवाना की गई। साथ ही फायर स्टेशन वैशाली से 3 गाड़ियां घटनास्थल के रवाना की गई और वहां जाके देखा तो अस्थायी रूप से जो फाइबर शीट थी उसको बालकनी से कवर्ड थी, उस सभी बालकनियों में आग लगी थी जो भी सभी फ्लोर्स पर फैली हुई थी। तत्काल
BA सेट पहन के कर्मचारी द्वारा अंदर तथा बाहर से आग बुझाना शुरू किया। A cylinder kept outside a house exploded Thursday morning in Karnal Ramnagar area. CCTV footage showed flames and smoke damaging a car and bikes parked nearby. The cylinder's owner suspected it was deliberately set on fire. Police have been informed and no casualties were reported. बाहर रखा था। अच्छा। गैस बनाई थी हमने। क्या कहता अचानक फट गया कोई अपने हाथ जान बुझ आग लगा दी। तो जानकारी दे दी पुलिस को? हाँ वो भी जानकारी। जी। फटने के बाद पूरा राउंड घूमा, सारे घरों में घूमा, प्रॉब्लम हुई, शीशे टूटे, गाड़ी टूटी, किसी का। A woman from West Bengal was allegedly gang raped and robbed at a private home on Bengaluru's outskirts late Tuesday. Police arrested 3 men while 2 others remain at large. The incident took place in Gangodanahalli under Madana Yakanala police station. The stolen items included 2 mobile phones and rupees 25,000. All suspects are local residents. Last night between 9:15 to 12:30, a case was reported in Madnaiknalli police station limits Gangagondanhalli, Dasanpura Hubli, where in a private residence there are 3 houses which are located in one row, and second and the third house where the victims were found, and the case has been, the incident has happened. Based on the call what we received at 12:39 in the night, the senior most officers and the local officers, we have arrived there and attended to this particular case, and the case has been registered under various sections of the law. Section 70 clause 1, 127 clause 2, 118 clause 1, 311, 324 clause 3, and 190 BNS. So these are the sections that have been put. Essentially, it's a case of gang rape, along with dacoity as well. As post the commission of the offence, the sexual assault that has happened, post that, they have also taken away 2 mobile phones and 25,000 rupees cash that was there in the house. A toddler thrown in a water puddle in a vacant plot near her home in Mangatu, Chenkalpattu, police said on Tuesday. 2 years and 10 months old Prinika Shri went missing around 4:30 p.m. after sleeping with her mother. Neighbors found her thrown in a rainwater puddle next door. She was taken to a hospital but was declared dead on arrival. Police have registered a case and are investigating. DMK legislator K. Ponuswamy from Santamangalam constituency passed away on Thursday morning due to cardiac arrest. The 74-year-old MLA was admitted to the hospital after complaining of discomfort. Ponuswamy had won the Santamangalam seat reserved for scheduled tribes in 2021 assembly elections and previously served as MLA from 2006 to 2011. His dad was left the seat vacant and a by-election will be held later. DMK MP Kanimoji expressed deep condolences to his family. Police in Odisha, Berhampur have arrested 12 people including political leaders in a murder case of senior advocate Pitabas Panta. Among those detained are former MLA and Ganjam District BJD President Bikram Panta, ex-Mayor Shiv Shankar Das, Corporator Malayala Bishoy and BJD leader Mandan Dalai. The murder was reportedly motivated by political, personal and professional rivalries with a rupees 50 lakh deal allegedly involved. Former Union Minister Chandrasekhar Sahu claimed the arrest, especially that of Bikram Panda, were politically motivated to defame the BJD. Investigations are ongoing. हमारा बरहमपुर पुलिस जिला में बैद्यनाथपुर पुलिस स्टेशन एरिया का अंडर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट श्री पितावास पांडा का ऊपर फायरिंग होके हत्या हुआ था
वो हत्या में मर्डर केस आर्म्स सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पुलिस टीम। एंड इसके लिए जो 6 स्पेशल टीम फॉर्म करके पूरा इन्वेस्टिगेशन में हमारा तदंत के बाद हमने अभी टोटल 12 लोग को अरेस्ट किए हैं। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विक्रम पंडा और पिंटू दास ये दोनों मिलके एक कॉन्स्पिरेसी करके और कुछ उन लोग का जो एम्प्लॉइज है जो मले विषय और मदन दले ये लोग का द्वारा और जो किसी शूटर्स बिहार से कुछ लोग को फाइनल फर्स्ट लेकर आया है। जब काम नहीं हो पाया फिर दोबारा लोकल कुछ लड़के को एंगेज करके इन लोगों के ऊपर हमला किया गया था। The Gognivira International Polo Cup was officially launched on Wednesday at the Army Equestrian Center, Delhi Cantonment, in a joint event by Gognivira IT Solutions and Indian Polo Association. The event showcased the unveiling of the trophy, symbolizing the deep sporting ties and camaraderie between India and Argentina, two nations with rich polo traditions. Team India, featuring Simran Shergill, Shamsher Ali, Sawai Badmanapi and Siddhant Sharma, is set to face world champions Argentina on October 25. Indian polo star Simran Singh Shergill expressed confidence ahead of the home ground match, thanking the IPA and sponsors for the event. The Indian Navy's Biennial Commanders Conference 2025 opened on Thursday with a Chief of Naval Staff praising the Navy's professionalism and recent successes like Operation Sindoor. Air Chief Marshal A.P. Singh highlighted the importance of joint operations in the Indian Ocean region. The CNS emphasized readiness, capability upgrades, and initiatives such as iOS Sagar and Akiem under the Mahasagar vision. He also stressed workforce development, technology adoption, and goal of a self-reliant Navy by 2047. 7 key focus areas were outlined to boost the Navy operational strength and regional role. Shivani, a young BSF constable from Uttar Pradesh, made history by earning an out-of-turn promotion to head constable just 5 months after joining. She won a silver medal at the 2025 World Wushu Championship in Brazil, prompting the early promotion, an unprecedented feat in India's Central Armed Police Forces. BSF Director General Daljit Singh Chaudhary praised her achievement and highlighted the force's strong support for athletes. Out-of-turn promotions reward exceptional performance and inspire others in the force. Long trains are running and Delhi's railway station, including Anand Vihar and New Delhi, are crowded with passengers traveling home to celebrate Chhath Puja. The Delhi government and Ministry of Railways have taken steps to manage the rush, and travelers report better facilities this year compared to before. Chhath Puja, dedicated to the Son of God, is mainly celebrated in Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh, with rituals observed from October 25 to 28. On October 23, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath held a high-level meeting to discuss the creation of new posts in a Fire and Emergency Services Department and the catered structures of prosecution service officers. The meeting aimed at strengthening fire services by expanding workforce capacity and improving the efficiency of prosecution officers to boost law enforcement and public safety. Officials presented proposals to optimize operations and address manpower needs. The CM stressed timely implementation to enhance emergency response and judicial efficiency across the state. BJP candidate from Jali,
Darbhanga faced controversy after a Scorpio vehicle carrying watches, pamphlets and election materials was seized near Maska Bazar. Opposition linked the vehicle to Mishra. Congress candidate Rishi Mishra inspected the vehicle on site and the police were called. Congress claimed the watches were meant for voter distribution, while the BJP MNA stated all items were illegally purchased with bills available. नाम से गाड़ी आवंटित है। देखिए अभ्यर्थी बुज्जीवेश कुमार, उनके यहाँ से गाड़ी है। आइए, अरे हटो ना यार। देखिए सारा सामान जो है भारतीय जनता पार्टी का है और ये काम आज नहीं हो रहा है, ये काम 1 महीने से हो रहा है और हर एक घर में, हर एक गांव में पहुंचाया गया है और ये गूंगी बैठी सरकार चुपचाप है। देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा, सारे कल्प्रिट हैं। देखिए फोटो लीजिए, यहाँ पे सारे कल्प्रिट हैं। देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा। मालूम नहीं कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है। रिति मिश्रा ने कह रहे हैं कि आपका गाड़ी है और आचार संहिता का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। हमारा गाड़ी जो है वो परमिशन की गाड़ी है, उनको समझ नहीं है। वो तो ललबबुआ रहे हैं, पिताजी के चिन्हों पर राजनीतिक करते हैं, परिवारवादी लोग हैं, तो उनकी चर्चा करना ठीक नहीं है हमारे लिए किसी तरीके से। The Election Commission has cancelled RJD's Shweta Suman's nomination from the Mohania Assembly seat after determining she is a native of Uttar Pradesh. Mohania in Gaimur district is a reserved seat for scheduled caste and candidates must be natives of the state to contest. Suman alleged her nomination was cancelled due to the pressure from BJP leadership. She also claimed the BJP candidate submitted her caste certificate after filing nominations, which was accepted by the EC. स्कूटनी में आए थे तो मुझे आज का डेट दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और जब हम आज गए हियरिंग के लिए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है आपका और कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मेरे वकीलों ने जबरदस्ती उनको कहा कि जब आप लिए हैं, टाइम दिए हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। हमने जितने भी कोर्ट में जितने भी चीजें हमने सब कुछ बताई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले कि हमने रिजेक्ट कर दिया है और सीओ ने, जिस सीओ ने बनाया था उसको प्रमाणित किया था, उसी सीओ ने उसको रिजेक्ट करके इनको दिया था और ये हमारी एक भी बात नहीं सुने और सीधे बोले कि हमने खारिज कर दिया है, आप जाके सीधे कोर्ट में मिलिए। कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे, आरओ पे बनाया जा रहा था और सीओ मजबूर होकर, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है। और The opposition India bloc on Thursday announced RJD leader and former Deputy CM Tejaswi Yadav as its chief ministerial candidate for the Bihar Assembly elections. At the press conference attended by coalition partners, senior Congress leader Ashok Gehlot said the decision had the backing of Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. Gehlot also stated that VIP chief Mukesh Sahni and another leader from the backward classes would serve as deputy chief ministers if the India blocs form the government. ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते।
On October 23, Bihar Chief Minister Nitish Kumar spoke at an event in Chhapra, reflecting on the state's social progress. He acknowledged past Hindu-Muslim conflicts but said the situation has now shifted towards peace and brotherhood. Kumar stressed the importance of maintaining communal harmony and urged citizens to keep fostering unity and cooperation to drive Bihar's development and prosperity. विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। और पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था और लोग नहीं करते थे। जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोग तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। और पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। We'll be right back after a short break. Keep watching Nltv. We'll come back. Now the next news. On October 23, the Central Bureau of Investigation submitted crucial evidence and witness statements to the District Court in Karur, Tamil Nadu as part of the ongoing investigation into this year's tragic stampede. The court will review the documents as the probe continues, with officials committed to securing justice for victims and holding those responsible accountable. India's top men's double pair, Chirag Shetty and Satvik Sairaj Rankireddy, were ousted from the French Open Super 750 badminton tournament after losing the round of 32 match to Indonesia Rahmat Hidayat and Muhammad Rian 18 by 21, 20 by 22 on Wednesday. Rising star Unnati Huda advanced to pre-quarterfinals by defeating Malaysia Lechana 11 by 21, 21 by 13, 21 by 16 in women's singles. However, Ayush Shetty exited in the first round after losing to Japan's Koki Watanabe 19 by 21, 19 by 21. Other Indian players Anupama Bhatia and Anmol Garg also bowed out early after defeats to China's Han Ye and South Korea's An Se-young respectively. On October 23, the U.S. Treasury sanctioned Russia's largest oil companies, Rosneft and Lukoil, blaming Moscow for continuing the senseless war in Ukraine. The move aims to cut Kremlin war funding aimed stealth peace talks. Russian drone and missile strikes targeted multiple Ukrainian cities overnight, killing at least 6, including a mother and her 2 daughters in Kiev. President Zelensky called for more military aid and stronger sanctions. Zelensky also signed a deal to buy Swedish Gripen fighter jets, aiding the U.S.-French aircraft already supplied. Peace talks remained stalled while Putin conducted nuclear trials, escalating tensions. Gaza's fragile ceasefire was severely tested this week as Israel launched airstrikes after Hamas militants killed 2 Israeli soldiers. In retaliation, Israel temporarily stopped aid deliveries
deliveries to Gaza, though officials say transfer will soon resume. The strikes killed at least 36 Palestinians, including children, with hospitals overwhelmed by casualties. Israeli Prime Minister Netanyahu ordered a firm military response to any further ceasefire breaches. U.S. Vice President J.D. Vance visited Israel to support a truce, while ceasefire talks continue in Cairo, focusing on disarming Hamas and Gaza's governance. Amid fears of renewed violence, both sides exchange hostage remains, with humanitarian concerns mounting. This is all for now in English Primetime. For